Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों और बाजार के जाने माने विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम शिशिर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। At the stock markets, Sensex falls 241 points, Nifty drops 72 points. Road Transport Minister Nitin Gadkari says more than 2,000 kilometers of national highways were constructed till November of the current financial year. And Agriculture Minister Narendra Singh Tomar says use of technology has eliminated the middlemen and benefited the farmers. घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 241 अंक लौटका, निफ्टी 72 अंक नीचे आया। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक देश में 2000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा तकनीक के इस्तेमाल से बिचौलिए हटे और किसानों को पहुंचा लाभ। घरेलू शेयर बाजार में आज फिर गिरावट हुई और कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 228 अंक यानी 0.4% घटकर 60,826 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 72 अंक यानी 0.4% नीचे आकर 18,127 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की बिकवाली सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में अधिक तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.8% घाटे में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.8% की गिरावट हुई। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange fell 241 points or 0.4% to close at 60,826. The Nifty at the National Stock Exchange dropped 72 points or 0.4% to 18,127. The broader market underperformed the Sensex, with the BSE mid-cap index slipping 0.8% and the small-cap index sliding 1.8%. On the BSE, all the sectoral indices except the tech index ended lower. The industrial index slid 1.8%. The capital goods and the utilities index slipped 1.6% each. The power index dropped 1.5%. The realty index lost 1.3%. The metal index declined 1.2%. The consumer discretionary and auto index fell 1.1% each. The telecom index shed 1%. The oil and gas and the commodity index dropped 0.9% each. The consumer durables and the energy index fell 0.8% each. The FMCG index slipped 0.7% and the financial services index slid 0.6%. शिशिर जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। एक नरमी का माहौल दिख रहा है, क्या सब कारक लग रहे हैं आपको बाजार में मंदी के पीछे? दो कारण है। सबसे पहला कारण अगर आप देखें तो जो अभी कोविड को लेकर के जो स्थिति पनपी है, एक थोड़ा सा भय का माहौल बन गया है। ये भय या डर आप जो भी नाम ले, इसकी वजह यह है कि चीन में इसका असर ज्यादा दिख रहा है और इससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ने की आशंका है। और उसका असर ये हुआ है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें कच्चा माल एक बड़े पैमाने पर चीन से आता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिख रहा है।
दूसरी तरफ अगर आप विश्व बाजार की स्थिति देखें तो यूरोप में हम पहले ही मंदी की बात करते रहे हैं, ब्रिटेन में मंदी की बात है, अमेरिका में हल्की मंदी की बात है, तो उसका भी असर कहीं न कहीं पड़ा है। इन सब का मिला जुला नतीजा ये रहा कि आपको शेयर बाजार में थोड़ी बिकवाली देखी गई। एक और बात यहां पर ध्यान में रखना है कि अब हम लोग साल के ऐसे चरण में हैं जब विदेशी संस्थागत निवेशक बोनस बुकिंग करते हैं। बोनस बुकिंग का शब्द का मतलब ये होता है कि साल के अंत में क्रिसमस के ठीक पहले जो कुछ भी उनको प्रॉफिट बुक करना है ताकि उनको अच्छा बोनस मिले, उनका बुक और स्ट्रांग हो, और ये हर साल ऐसा होता है। इस साल ये स्थिति और ज्यादा इसलिए दिख रही है क्योंकि हम बिकवाली के माहौल में हैं, इसलिए ये आपको खुल करके दिख रहा है, पर नहीं तो ये हर साल ऐसा होता है। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से आप शेयर बाजार में थोड़ी नरमी देख रहे हैं, और ये एक कह सकते हैं कि अगले एक सप्ताह तक जो है वो स्थिति कुछ ऐसी ही बनी रहेगी। बहुत ज्यादा खरीदारी या बहुत ज्यादा बिकवाली होते हुए आप नहीं देखेंगे। कुछ बिकवाली इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि एक जो भय है कि इस कोविड की वजह से आर्थिक गतिविधियों पर और असर न पड़े, शायद उसका आप अगले एक सप्ताह तक ये असर देख सकते हैं। Shishir, the domestic benchmark indices traded in the red today, as we read out a while back, with decline across most of the sectors except for the tech index. That's where a bit of hope was there. But other than that, everything was low. After this happened, I would like to believe the monetary policy minutes of the RBI policy meet revealed strong concern about the elevated inflation, and of course, as you mentioned, the COVID cases in China weighing the sentiment. So this negativity in the market will continue for some time, or is there anything that is going to happen apart from the bonus booking that you said that happens? And that is one of the element. And if we take the next 2 weeks, that is the most critical period. What kind of trend we are going to see. So what we understand that next 2 weeks we will see some kind of laziness in the market, or more selling off because of the panic or because of the fear that economic activities may be affected because of the COVID thing. Other thing is that we are fearing that some kind of impact on the demand, consumption demand, and that consumption demand is because of the high interest rate. RBI has no option but to increase the interest rate to curb the inflation. Correct. And when you are increasing the interest rate, that is going to impact the consumer demand. So that is one fear which is also affecting a market. And as you mentioned about all the indices, whether you talk about FMCG, whether you talk about consumer durables, all the indices are in red just because there is a fear that demand may not be the same during the next quarter or during the next 2 months, and that is also affecting the market sentiment. The Nomura report has come in, and they said India is a compelling long-term growth story and by far the most attractive proposition for investors. Will it continue to be so in 2023? We are just at the cusp of closing. Yeah, certainly. See, long term and medium term, there is no doubt about that. I mean, we all know that the growth potential is very high in medium term and the long term. But the important thing, and if I just want to recall what Keynes said, GM Keynes said, he said in the long run we all are dead. Yes. So we have to think about what is happening at this moment. At this moment, the sentiment is not good. And growth potential is high, but sentiment is not good. And please understand that the market mostly play on the sentiment, not on the fundamental. Fundamentals play major role in medium term and long run. In the short run, sentiment is a critical, and at this moment, sentiment is negative. But as you ask about this 2023, what I understand that 2023 would be better, especially the second half of 2023, when this fear of COVID will subside, then we will see a real growth scenario during the second half of the calendar 2023. शिशिर जी, बड़े रोमांचक मोड़ पर कह लें कि चर्चा को आप ले आए हैं। यहाँ हम ये समझना चाहेंगे कि जो बीता ये साल रहा है, साथ ही इसमें हम कोविड के 1-2 साल को और जोड़ दें तो कौन से ऐसे सेक्टर उभर के नजर सामने दिख रहे हैं जहां निवेश अगले 1 कैलेंडर ईयर या 2 साल का मध्यम अवधि कह लें उसमें उभर के यानी अच्छा रिटर्न देते नजर आ रहे हैं आपको? सबसे ज्यादा मेरी नजर होगी फाइनेंशियल सेक्टर पे। फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें उम्मीद काफी ज्यादा है, और जिस तरीके के उसमें इनोवेशंस हुए हैं, जिस तरह की नई नई चीजें आ रही हैं, जिस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि डिजिटल जो इकोनॉमी बढ़ रही है,
उससे फाइनेंशियल सर्विसेज के आगे बढ़ने के चांसेस हैं। और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी मेरी ज्यादा नजर जो होगी वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे होगी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर के वो थोड़े से वो अंडर परफॉर्म रहे हैं। उनके ऊपर थोड़ी से लोगों को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा बेटर कर रहे हैं, लेकिन अगले एक साल के दौरान आप देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। इसके अलावा जिसे कहते हैं ना कि एक डिफेंसिव सेक्टर हम लोग कहते हैं जिसको, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हो, ये सेक्टर ऐसा है जो ऑल टाइम हिट रहा है। और जैसे जैसे मतलब ये भी एक अजीब सी विडंबना है कि हम लोग बीमारी की बात करें और वहां पर कोई एक सेक्टर जिसको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है वो है फार्मास्यूटिकल, और वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या लेबोरेटरीज जो इस धंधे में हैं उनके लिए ये साल थोड़ा अच्छा रह सकता है। लेकिन मेरी नजर जो होगी, मैं फिर से दोहराऊंगा, फाइनेंशियल सर्विसेज पे होंगी। Okay, I'm coming back to Jim McCafferty again, and he said that the stock market's point of view, valuations are almost priced to perfection, and this is an issue. Do you agree? Would you like to elaborate on this point? See, valuation is always a subjective issue. For one investor, the valuation will be low. For the one investor, valuation will be high. And normal thinking in stock market is that when the market is low, you should buy. When the market is high, you should sell and earn the profit. Normally, we see just reverse of that. When the market is high, people go and buy the shares, and when the market is low, people try to sell the shares. So that is the situation. So real issue is that what kind of valuation we are looking at. And other thing is that for the institutional investor, the valuation will be quite different. For the retail investor, the valuation will be quite different. So I don't think the valuation term can be called as a perfect or something perfect word can be added to the valuation. For my understanding, valuation is purely a subjective issue, varies from individual to individual. So he's also called India the midterm champion, and you elaborated on that a bit. What could be the rationale behind this conclusion that he's making, one? And the second, what can India do to maintain this momentum that it has gained over a couple of years? Two things. If you take the other economies, if I take the IMF number, we are in the top 5. So if you take the other 4 economies, they are not in good shape. And if you take the other 5 which are after India, some of them are also not very good. So in that situation, India is supposed to be, or India is considered to be one of the brightest spot. And if I recall what IMF chief had said once, that it is one of the brightest spot in the dark kind of situation. So this is giving some kind of value proposition to Indian stock market, where investors are looking for higher return in India in comparison to the other. You will be surprised to know that some of the investors are also saying that Indian stocks are highly overvalued or at a very high price. We should not enter. But there are a large number of investors who are thinking that India is a good opportunity. So in the medium term, in the short run, the sentiment is poor. In the medium term to long term, the sentiments are very good. And if you take all the agencies' report, whether we talk about the IMF, whether we talk about World Bank, whether we talk about Nomura, or whether we talk about Fitch. In fact, Fitch has affirmed India's sovereign rating at BBB- with the outlook at the stable. So if this kind of impression is there, so medium-term things are really looking very promising. Now what India should do? The most important thing is the fiscal consolidation. So next budget will be very, very critical from the fiscal consolidation point of view. All over the world, investors are, and especially the agencies are looking for what kind of fiscal consolidation measures India is going to take in next 2 years. So before the general budget, we are going to have 2 budgets. One will be, of course, the full budget, and the next budget will be the interim budget. I mean, that's a convention. Rule does not prohibit government to present the full budget, but the convention is to present the interim budget. So what we are seeing, fiscal consolidation will be key in the medium term. From the investor's point of view, do you think they need to be careful of the sharp intraday volatility, the COVID cases, as you pointed out, and the recessionary fears in key economies, and also the fear of hikes going ahead in the other economies? So because of that, the investors should be cautious. What should I, as an investor, do? Let me put it this way. If you say investor, do you mean retail investor or institutional investor? Both. Both.
So from the retail investor point of view, my thinking is that they should not go to the market at this moment because the market is too volatile and the risk is very, very high. So better way is to use the mutual fund market to enter the stock market or to go for other instrument like sovereign gold bond or any other instrument. For the institutional investor, at this moment, it is good time to enter. So what we are expecting that when they are going to make allocation for 2023, when they will come out from Christmas vacation, they are going to make higher allocation for India. Because if you compare with other economies, other emerging economies, India is going to give them good return. That's the expectation. And that means the allocation will rise. So from a retail investor point of view, my advice would be do not enter this market. For the institutional investor point of view, there is a good opportunity to make money. And would you buy this logic that markets may correct for technical factors? It's very difficult for me to explain on this factor, but what I believe that market runs most on the sentiment. Technical and fundamentals are something for the people who are very deep into the market. For a common investor, the important thing is the sentiment. And at this moment, sentiment is not good. So in coming days, you think because of the lack of sentiments, positive sentiments, we will continue to be in the current situation that we are in? For next 2 weeks at least, I can say, for next 2 to 3 weeks. So what are the triggers that are coming? Positive triggers that you say after 2 weeks? Positive triggers will come only in the budget. The budget is the very, very critical because this is the last budget, technically speaking, last budget before the general election. So we are expecting some kind of positive thing, some kind of vision, some kind of policy direction, and that will give trigger to the stock. So what are your expectations that will bring in the positivity, as you say? I think from the budget. From the budget, the most important thing is that there should not be overspending on revenue. There should be higher spending on the capital side. So if you take this year budget, 22-23, out of 39 lakh crore, 39.45 lakh crore budget, we saw capital expenditure of 7.5 lakh crore. And then there is another grant in aid of 2.5, so taking it to 10 lakh crore plus. So capital expenditure, if you increase the capital expenditure, that will certainly give some kind of positive things to the market. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां चीन को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर लिवाली की गई। अमेरिकी शेयर बाजारों में कल आई तेजी का आज निवेशकों पर अनुकूल प्रभाव दिखा है। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.5% लाभ में रहा। हांगकांग के हिंगसेंग ने 2.7% की छलांग लगाई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.2% ऊपर आ गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.4% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.5% नीचे फिसल गया। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो जापान में सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमान में सुधार करते हुए कहा कि निजी खपत और पूंजी खर्च बढ़ने से वृद्धि दर बढ़कर वास्तविक रूप से 1.5% तक पहुंचने की संभावना है। सरकार ने यह भी कहा कि इस दौरान निर्यात में 2.4% और आयात में 2.5% की वृद्धि हो सकती है। यूरोपीय बाजार पर ध्यान दें तो अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.5%, फ्रांस का CAC 40 0.3% और जर्मनी का डेक्स 0.2% बढ़त के साथ चल रहे थे। On Wall Street, key indices rallied yesterday on upbeat quarterly updates from Nike and FedEx and improving consumer confidence and easing inflation expectations from investors. Nike shares shot up 13% after beating profit expectations for its second quarter on strong holiday demand from North American shoppers, while FedEx jumped almost 5% and cruise operator Carnival Corp surged almost 7% after posting a smaller than expected quarterly loss. Also, U.S. consumer confidence rose to an 8-month high in December as inflation retreated and the labor market remained strong, while 12-month inflation expectations fell to 6.7%, the lowest since September 2021. So the Dow Jones Industrial Average climbed 527 points or 1.6% to end at 33,028. The S&P 500 advanced 57 points or 1.5% to close at 3,878. And the Nasdaq Composite added
162 points to 10,709. In economic news, the U.S. current account deficit narrowed sharply in the third quarter as exports jumped to a record high, data showed yesterday. The Commerce Department said the current account deficit contracted 9.1% to $217 billion last quarter, which is the smallest since the second quarter of 2021. The report, Shishir, sounds good. And you think this will change the mind of the Fed officials? It should. It should. The real problem is the inflation. At this moment, the inflation is still high. And the good thing is that we are not seeing that what we call as the tapper tantrum. So earlier, when if you go to 2012, 2013, there were too much uncertainty that what kind of Federal Reserve moves will be there. This time, there is too much certainty is there. So we know that what kind of rate hike is going to happen. So that is why it is not giving or it is not creating any kind of uncertainty into the market. And that is also affecting the global market. The other issue is that the local elements. So like in India, when we say that the consumption demand is low, and US we are seeing that the consumer confidence is high. These are the two contradictory things. But in India, that sentiment is affecting the local market also. In US, that consumer confidence is affecting or benefiting the market. Now the real challenge is to curb the inflation. All over the world, the real challenge is how to check the inflation. But the good thing is that the inflation control are in a regulated manner or in a certain manner, not what we saw in 2012 and 13. That's a very, very positive thing for the US economy. यहाँ पर शिशिर जी ये समझना चाहेंगे कि विश्व अर्थव्यवस्था के धीमे पड़ने की आहट दिखाई दे रही थी और अब जो खबरें आ रही हैं वो दोनों स्तर पर एक विभिन्न कंपनियों के जो परिणाम आ रहे हैं उससे भी और जो उपभोक्ताओं में एक नया विश्वास देखा जा रहा है उस स्तर पर भी जापान में भी वहां सरकार कह रही है कि अर्थव्यवस्था में बढ़त होने के आसार हैं। अमेरिका में भी मंदी की आहट अब कितनी रह रही है और विश्व अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर मंदी कितनी दिख रही, कितनी बड़ी दिख रही और उसका आयाम भारत पर कैसा पड़ सकता है? देखिए, हमें यहाँ पे दो तथ्यों पे ध्यान रखना है कि क्या हम मंदी की बात कर रहे हैं या विकास दर धीमी पड़ने की बात कर रहे हैं। अमूमन क्या होता है कि हम लोग स्लो डाउन और रिसेशन के बीच का अंतर नहीं महसूस कर पाते हैं। सभी लोग स्लो डाउन को रिसेशन में डाल देते हैं, जबकि तकनीकी तौर पर रिसेशन का मतलब है कि 2 तिमाही आपकी जीडीपी में गिरावट है, जीडीपी में नेगेटिव हो जाए, और मंदी का मतलब है कि आपकी विकास दर धीमी पड़ जाए। जापान का जहां तक आपने जिक्र किया है, तो वहां आप याद रखिए कि लंबे समय से उनकी विकास दर बहुत धीमी थी, तो वो अब एक बेस इफेक्ट उस पर ज्यादा दिख रहा है। हमारे लिए इस समय जो बड़ी चुनौती है यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका। अमेरिका में थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन यूरोप और ब्रिटेन में अभी स्थिति बहुत होती हुई दिख नहीं रही है। तो ऐसे में एक बड़ी अर्थव्यवस्था, एक बड़ी संख्या में अर्थव्यवस्था अभी भी एक मंदी की भी आहट में है और दूसरी तरफ वहां पर विकास दर भी धीमी पड़ गई। तो उसका असर हमारे देश पर तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप देखिए एक्सपोर्ट में अभी हमने एक अच्छी बढ़त देखी, निश्चित तौर पर बढ़त देखी, लेकिन जब दुनिया के बाजारों में थोड़ी मंदी हो या दुनिया के बाजारों में अर्थव्यवस्था धीमी चल रही हो तो हमारा निर्यात तो प्रभावित होगा, और जब निर्यात प्रभावित होगा तो उसका असर मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ेगा, विनिर्माण पर पड़ेगा, और उससे आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति पर भी उसको असर देखने को मिल सकता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था अछूता हो ये नहीं हो सकता। दुनिया के किसी भी देश में कोई घटना घटे और हम उससे बेअसर हो जाएं, ये नहीं हो सकता। हमें उसका असर झेलना ही है। Moving on, the government has set a target of constructing 12,200 kilometers of national highways during 2022-23. In a written reply in the Lok Sabha, Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said 4,766 kilometers have been contracted till last month. He said a total of about 2,000 kilometers length of 4, 6 and 8 lane national highways were constructed during the current fiscal till last month. This is more than 1,806 kilometers constructed during the previous financial year for the same period. Mr. Gadkari said his ministry is closely monitoring
construction progress and proactively working with project implementing agencies, state governments, contractors and developers to resolve issues and bottlenecks in projects and speedy construction of national highways. Shishir, healthy infrastructure development points towards a strong and healthy economy. Certainly, and the road is very critical in terms of that it has a multiplier effect. Any kind of construction activity has direct or indirect impact on almost 400 kind of economic activities. And the most important thing is the employment generation. The next thing is that when you are constructing the road, it is also going to provide a flip to logistic costs. At this moment, the logistic cost is almost 14%. We have to bring it down to the single digit. So the road, ports, or any kind of infrastructure, that is going to bring down the logistic cost. And of course, the road is the most important thing. I believe that as much road is constructed, whether 20,000 kilometer or 30,000 kilometer, that is certainly going to help lot of economic activities, and most important is that the cost of economic activities will come down. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना के जरिए किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि प्राप्त हो रही है। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि डीबीटी योजना के माध्यम से किसानों के खातों में 3,81,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से बिचौलिए की भूमिका अब खत्म हो गई है और इससे पारदर्शिता आई है तथा किसानों को फायदा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों को 2021-22 के लिए 1,18,000 करोड़ रुपए से अधिक के कुल बकाये में से 1,14,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। कृषि और कल्याण मंत्री ने बताया कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में कुल निर्यात 6.8 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़कर 2021-22 के दौरान 110 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। The Maruti Suzuki India has signed a 5-year pact with Kamarajar Port for export of its passenger vehicles to international markets. Under the agreement, starting December 2022, Kamarajar Port will be used for exports to Africa, Middle East, Latin America, ASEAN, Oceania and SAARC regions by the company. The port will be used to export around 20,000 cars annually. And global crude oil prices climbed for a fourth straight day today as a wintry blast hits the United States. So the Brent crude futures gained 74 cents to trade at $82.94 a barrel. U.S. crude futures rose 81 cents to $79.10 a barrel. A quick comment on where the oil is headed. Oil, I believe that it all depends upon that what kind of winter demand is there. Normally what happens that in Europe and US... The blast has come. Yeah, that's the most important thing. So, and we are also seeing some kind of economic activities in Europe. So, it will have impact on the crude prices, but I don't think that it will have a very high like what we saw 2 months back or 3 months back. Now, the important thing is that what kind of economic activity we see in China, because the Chinese demand will impact the crude in the bigger way. The only good point for us is that we are getting more and more crude at cheaper price from Russia. And if the European cap, EU cap comes into effect, and that is also going to have some kind of impact on the prices, I beg your pardon, that will have impact on the crude prices, but it will not go beyond 100 or something like that. I hope what we saw. आइए अंत में चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। एक ओर जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सकारात्मक संकेत मिला घरेलू सर्राफा बाजार को, तो सोने का मूल्य बढ़ा। 59 रुपए की बढ़त आज सोने में देखी गई। ये 55,241 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं मांग कम निकलने से चांदी 194 रुपए फिसलकर 69,413 रुपए पर रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य बढ़ा, $1,817 प्रति औंस पर पहुंचा। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शिशिर जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। Thank you, Shishir, for being with us. And before we close, the headlines once again. At the stock markets, Sensex falls 241 points, Nifty drops 72 points.
Road Transport Minister Nitin Gadkari says more than 2,000 kilometers of national highways were constructed till November of the current financial year. And Agriculture Minister Narendra Singh Tomar says use of technology has eliminated the middlemen and benefited the farmers. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.